हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बनने वाले हैं डिटेक्टिव इन द बेस्ट डिटेक्टिव गेम ऑफ द वर्ल्ड, शेरलॉक होम्स क्राइम्स एंड पनिशमेंट। न्यू गेम स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैंने ये गेम पहले भी कंप्लीट की है 3-4 मरतबा। Dr. Watson, Classified, Mr. Watson, Mycroft, Begin and the BSI. ये गेम 2014 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन 2014 के लिहाज से इस गेम के जो फिज़िक्स हैं, जो ग्राफिक्स शेडर्स हैं, वो बहुत ही आला हैं जिन पे आजकल की गेमें बेस्ड हैं। 2014 में इस्तेमाल की गई थी। जैसे इसके ग्राफिक शेडर पे आजकल चल रही हैं बहुत सारी गेमें, जैसे शेरलॉक होम्स चैप्टर 1 इसी के उस पर बनी है। अभी तो हम शुरू कर रहे हैं 2014 की शेरलॉक होम्स क्राइम्स एंड पनिशमेंट। ओ ये है डॉक्टर जॉन वाटसन, वो है शेरलॉक, ये है शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स जरा गेम खेलता जरा अजीब तरीके की। ओ तेरी अपने दोस्त पे गोलियां चला रहा है भाई। ओ तेरी बस कर दे। Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. ये फुटस्टेप से ही पहचान लेगा कौन आ रहा है। 9 step avoided, Inspector Lestrade है। Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. नहीं, Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. Gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, तो हम क्या most करें? probably. What happened here? ओ Oh, तेरी Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. yes I I am। missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? yes I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more अब about केस की तरफ Black जाते हैं। Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious, Mysterious that I would prefer crime. you to join me. मुश्किल होगा Give me half an hour to prepare, Inspector. इंस्पेक्टर। Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. ओके I shall go alone then. हाँ तू अकेले ही जा, तू क्या दोस्तों के साथ जाता है। टैप टू ओपन द केस बुक एंड चेक योर करंट। अभी तो कुछ किया भी नहीं। मिसेस हडसन बहुत गुस्सा है। कपड़े पहन के निकलते नहीं तो मिसेस हडसन खा जाएगी। गाउन पहन के चलते हैं। नहीं ये नहीं, ये सूट नहीं। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। चलते हैं अब। मैं जा रहा हूँ। Oh, what a mess! What a terrible mess! अच्छा आंटी गुस्सा सुनाकर वुडमैन्स ली, जहाँ पे ब्लैक पीटर रहता था।
मर्डर हुआ कैसे ये जानना बड़ा जरूरी है। Select a suit to wear, ये तो वो कैसे है? Peter Carey, also known as Black Peter, was born in 1845 at 50 years old. He achieved great success in whale hunting in Scandinavia, retired with small fortune in 1884 and eventually moved into Woodman's Lee. 1884 मतलब 11 साल इसने इधर गुजारे थे। 11 साल वुडमैन्स ली में, 50 साल में से 11 साल तो वुडमैन्स ली में। मर्डर कहाँ पे हुआ है? Mr. Holmes, I'm over here. Come on. अच्छा तू यहाँ पे खड़ा है, आ रहा हूँ। चलो भाई चलें लेस्ट्राड साहब के पास। Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. अच्छा ठीक है, जा। My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Thank you, Mr. Holmes. हाँ ये कैमियो, ये क्या पहना हुआ है? पता नहीं क्या है। वैसे आंटी कुल की बिरयानी है, कोई चावल वगैरह कोई चीज़ बांटेगी तो ज़रूर बुलाइएगा। Everything will become when was there anything unusual? Madam, can you tell me if you... At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. अच्छा, evening before when was there? Everything will become You easy. have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. अच्छा, He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, how do you know about that? इसने पिलग्रिमेज ली थी ना प्लिमथ में। प्रोफाइल ऑफ द विक्टिम क्या? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. एक्स्ट्राऑर्डिनरी। Can इसको you अभी तक please शेरलॉक tell होम्स का me ही नहीं what पता कौन occurred है। on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. बॉडी कब मिली? At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... 7 क्लॉक पे दरवाजे पे गई थी डर के, वापस आई 10वें क्लॉक पे जाके जी। Was your देखा husband तो a cousin? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. अच्छा विजिटर भी नहीं He आते lived थे, quite फिर an किसने isolated मारा? life here. जब After his विजिटर ही नहीं थे, retirement. मुझे इस पे शक है। Thank you, madam. थैंक यू मैडम, मुझे तुम पे शक है। It seems that the garden was well maintained. गार्डनर तो होगा, गार्डन बहुत प्यारा बना हुआ है। ओह लेस्ट्राड बाद में आया। यहाँ पे मुझे कुछ शक पड़ रहा था। हाँ ये देखो स्टोन पाथवे पे ये फुटप्रिंट्स हैं। वो अन्य को अभी तक नहीं मिल रहा, बार बार ये कर रहा है। चलो अब लेस्ट्राड के पास जाते हैं। Peter Carey's body is inside the cabin. चल ठीक है यार, तू लड़ता है। The door is locked. लॉक्ड। Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. क्या? What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. अल्लाह, Let me see. किसी ने इसको खोलने की कोशिश की। ये क्या रातों रात कौन आएगा? ओए पुलिस यहाँ पे पैर नहीं दे रही थी, तू क्या करता है यहाँ पे? लेस्ट्राड? These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now, a mysterious visitor came Came here here last last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. तो तू आज क्यों रहा है? Perhaps
ये फर्स्ट पर्सन में मैं ओ तेरी क्या कैसे मर्डर हुआ देखें ओ तेरी भाई What a terrible way to die. ओ तेरी Peter Carey was in... This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. जानता था जिसने उसे मारा ओह सी नाइफ वो भी ब्लड में ड्रेंच्ड This wouldn't... Peter Carey tried to defend... पीटर कैरी डिफेंड करना चाह रहा था लेकिन अगर डिफेंड करना चाह रहा था तो फिर J... These abbreviations mean something. But what? क्या मीन करती होंगी एब्रिविएशंस बॉडी तो मेरे ख्याल में एग्जामिन हो गई है अब बढ़ता हूँ यहाँ से नहीं वो अभी भी दे रहा हूँ पीटर कैरी का फेस पियर्स द चेस्ट के बीच में से निकली है सीधा हार्पून गया Someone rum. It seemed that ये क्या पीसी the initials PC Peter had Carey been बनता है crudely burned. The वाको ये क्या है ये क्या करना है मूव पाइप टोबाको लीव हाँ उधर चली गई हो भाई तू इधर आ तू किधर जा रहा है हाँ ये भी उधर चला जाता हाँ ये ले ये क्या है यार क्या डांस किस मशीन में करने लगे ये सब कुछ सीधा तो हो हाँ ये ऑप्शन चाहिए कोर्स टोबाको था This is a coarse tobacco. बस ठीक है यार बार बार बता रहा कोर्स टोबैको का बच्चा चेस्ट में पड़ा है ओल्ड नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स और इसके बूट हैं ठीक है Peter Carey's... बस ठीक है 8 साइज के हमें क्यों बता रहे The murder weapon was probably... इस शेल्फ पे कुछ एक मिनट ये आउटलाइन है बाकी ये क्या हाँ यहाँ पे कुछ था मैं कह रहा था An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. और ये मैप क्या है स्वेलिंग मैप होगा उसका अपना Have you finished inspecting the crime scene? अब डिटेक्शन बनाते हैं पेन टू द वॉल नहीं ये नोटबुक के लिए ब्रेक इन अटेम्प्ट्स हुई थी ambush may be made tonight Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Well, Mr. Holmes, what do you think? Now, I think that we are lucky. And why is that? Because of last night. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. और बस आज इस एम्बुश तक ही खेलेंगे अब एम्बुश की जगह ढूंढते हैं ये ठीक है like the perfect hiding place. तो एम्बुश हम शुरू करने वाले हैं उस पे ओह कोई आया
Shh. Did you hear that? हाँ कोई तो है। हाय हाय ये पहला सस्पेक्ट है। There's someone there. I'm going to cry. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ शेयर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट लीव कीजिए कि वीडियो कैसी थी और गेम कैसी थी। अल्लाह हाफिज़।